Hello everyone, welcome to Power Electrics. आज हम डिस्कस करबा सिलेबस ओपीटीसीएल जेएमओटी रो सिलेबस ऊपर हम आज डिस्कस करबा कौन कौन सिलेबस अछि केते क्वेश्चन आसुची तो चलो हम स्टार्ट करबा। तो देखो सब्जेक्ट नॉलेज 80% आसुची सब्जेक्ट नॉलेज माने इलेक्ट्रिशियन टॉपिक ऊपर आसुची 80%। 160 नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल होची 200 क्वेश्चन टोटल होची 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रो 160 होची टेक्निकल एंड 40 होची नॉन टेक्निकल 40 क्वेश्चन तमर आसी जीवो नॉन टेक 160 क्वेश्चन आसी जीवो तमर टेक तम सब्जेक्ट नॉलेज रो। तो चलो हम देखिबा कोन कोन सब अछि। नंबर 1 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एथरे तमर आसी जो बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन आसी पर्सनल प्रोटेक्शन बेसिक इंजुरी प्रिवेंशन बेसिक फर्स्ट एड hazard identification and avoidance safety signs for danger warning caution and personal safety message use of fire extinguisher vision and observation of sections various safety measures involved in the industry elementary first aid concept of standard ଏତିକି ସବୁ ଆସିଯିବ ତମର occupational safety and health ରେ। नंबर 2 रे तमरा आसी जीवो occupational safety and health importance of housekeeping and goods of floor practices एथिरे तमरा आसी जीवो health safety and environmental guidelines legislations and regulations as applicable disposal procedure of waste materials like cotton waste metal chips boards etc basic safety introduction personal protective equipment PPE, basic injury prevention, basic first aid, hazard identification and avoidance, safety signs for danger, warning, caution, and personal safety message. Preventive measures for electrical accidents and steps to be taken in such accidents. Use of fire extinguishers. It is important. Number 3 ରେ ଆସିବ introduction of a national electrical code 2011 introduction of a national electrical code 2011 ଏଥିରେ ଆସିବ ତମର explanation definition and properties of conductors insulators and semiconductors voltage grading of different types of insulators temperature rise permissible types of wires and cables standard wire gauge, specification of wires and cables, insulation and voltage grades, low, medium, and high voltage precautions in using various types of cables and ferrules. Number 4 ରେ ତମର ଆସିଯିବ Ohm's law, resistors, Kirchhoff's law and applications. ଏଇଠୁ ତମର ଇଏ ହେଲା ତମର ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଓର ଟେକ୍ ତମର ଆସିବ ଏଇଠୁ ପିଓର ଟେକ୍ ପିଓର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତମର Ohm's law, simple electrical circuits and role lamps, reading of simple electrical layout, resistor ରେ ତମର ଆସିଯିବ law of resistance, series and parallel circuits, Kirchhoff's law ରେ ତମର ଆସିଯିବ laws of and applications of Kirchhoff's law, Wheatstone bridge principle and its applications, effect of variation of temperature on resistance, different methods of measuring the value of resistance. Next. Number 5 ରେ ତମର ଆସିଯିବ common electrical accessories ଏଥିରେ ତମର ଆସିଯିବ common electrical accessories their specifications in line
with NEC 2011, explanation of switches, lamp holders, clocks, and sockets, developments of domestic circuits, alarms and switches with individual switches, two-way switch, security surveillance, fire alarm, MCB, ELCB, and MCCB. এই ଟପିକଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ଏଟାକୁ ତମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବନି କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ତମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ହିଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ। या पर नेक्स्ट तमर आसीଯିବ नंबर 6 रे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तमर आसीଯିବ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's law of electrolysis, basic principle of electroplating and electrochemical equivalents। एथुरु electrochemical equivalents तमर कोस्ट प्रॉब्लम आसे मान न्यूमेरिकल क्वेश्चन तमर आसी जाय एथुरु। explanation of anodes and cathodes। Then ଆସିଯିବ lead acid cell, description, methods of charging, precautions to be taken and testing equipment, nickel, cadmium and lithium cell, cathodic protection, electroplating, ion anodizing, different types of lead acid cells, different types of lead acid cells। ये तमर important topic। एथुरु तुमको किछि क्वेश्चन देखियाको मिलिबो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे। नेक्स्ट नंबर 7 आसीଯିବ रिचार्जेबल ड्राई सेल, description, advantages and disadvantages। रिचार्जेबल ड्राई सेल विषय रे आसीଯିବ description, advantages and disadvantages, care and maintenance of cells, grouping of cells of specified voltage and current। grouping of cells रो क्वेश्चन आसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, sealed maintenance, free batteries, solar batteries। next नंबर 8 रे तमर आसीଯିବ इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, यूपीएस, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ये भी तमर इंपोर्टेंट ए टॉपिक रो क्वेश्चन आसे। इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, यूपीएस, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, लीड एसिड सेल, जनरल डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज, निकेल अल्काली सेल डिस्क्रिप्शन, चार्जिंग, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्स। पावर एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्स रो तमरो क्वेश्चन आसीଯିବ। पावर एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्स रो तमरो क्वेश्चन आसीଯିବ। एफिशिएंसी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट ओवरऑली इन्वर्टर, बैटरी चार्जर एंड यूपीएस, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ए टॉपिक रो 8 नंबर 8 सीरियल नंबर 8 रो जो टॉपिक अछि ए टॉपिक रो तुमको क्वेश्चन देखिया को मिलिबो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे, सो ए टॉपिक को नेग्लेक्ट करिवोने। नंबर 9 अल्टरनेटिंग करंट, एटा तमरो समस्तଙ୍କର फेवरेट, कार कार एटा काको हुएनी, बट ए टॉपिक आमे देखिबा जदी ए टॉपिक रे तुमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिया को मिलिबो, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखिया को मिलिबो। सब प्राय एग्जाम रे प्राय एग्जाम रे अल्टरनेटिंग करंट रो क्वेश्चन देखिया को मिले, सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, comparison and advantages, DC and AC related terms। next frequency, instantaneous value, RMS value, average value, peak factor, form factor, generation of a sine wave, phase and phase difference, inductive and capacitive reactance, impedance, power factor, active and reactive power, simple problems on AC, simple problems on alternating current, circuits, single phase and three phase system etc। problems on AC circuits, AC circuit रो problem रो तमरो क्वेश्चन देखिया को मिले प्राय एग्जाम रे। power consumption in series and parallel, power factor etc। concept of a three phase star and delta connection, star and delta connection क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिया को मिले, theoretical क्वेश्चन भी देखिया को मिले। line and phase voltage, current and power in a three phase circuits with balanced and unbalanced load। next नंबर 10 रे आछे अर्थिंग। अर्थिंग रे तमरो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, इंपोर्टेंस ऑफ अर्थिंग,
improving of earth resistance, earth leakage circuit breaker, earth leakage circuit breaker यार full form exam रे आसीपारे. In absence of latest revision in respective BIS provision for earthing, it is recommended to follow IEC guidelines. ଏଥିରୁ ତମର question earthing ରୁ ବି ତମର ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ର question ଆସେ, quite important. Next, basic electronics. Basic electronics ତମର ଆସିଯିବ semiconductor energy level, atomic structure, p-type and n-type semiconductor, type of materials, p-n junction, classification of diodes, reverse and forward bias, heat sink, specification of diode PIV rating, explanation and importance of DC rectifier circuit, half wave, full wave and bridge circuit, filter circuits and passive filter. Filter circuit to तमरा आसीबो only passive filter. सो तुमको पूरा फिल्टर पढ़िया दरकार नहीं, फिल्टर सर्किट रो पैसिव फिल्टर ओनली मेंशन करिछि. नेक्स्ट, नंबर 12 जदि हम देखिबा, नंबर 11 जाइछे रे. हां, नंबर 12 जदि हम देखिबा, 12 रे तमरा सुछि आई रूल्स, टाइप्स ऑफ वायरिंग्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, स्पेसिफिकेशन ऑफ वायरिंग, ग्रेडिंग ऑफ केबल्स एंड करंट रेटिंग्स, principle of laying out in domestic wiring, voltage drop concept, wiring system, electric wiring. এটা ଗୋଟେ important topic. VVIMP, very important topic. PVC concealed system, maintenance and repairing, dataset preparation, specification, standards for conduits and accessories, power wiring, control wiring, information communication, entertainment wiring, testing of wiring installation by Megger. এই টপিকটা ତମକୁ पढ़िया ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟପିକ ତମକୁ ତମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ବି ହଉଛ ଓପିଟିସିଏଲ ରେ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରେ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରେ ଏଇ ୱାରିଂ ରିଲେଟେଡ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେ ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ. ସୋ ୱାରିଂ ଉପରେ ତମେ କିଛିଟା ତମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର, ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର. ସୋ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଟପିକ ଟାକୁ ତମେ ଭଲସେ ପଢିବ. ନେକ୍ସଟ, नंबर 13 तमरा आछि डीसी मशीन. डीसी मशीन तमरा आछि जनरल कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यूज ऑफ आर्मेचर, फील्ड कॉइल, पोलैरिटी, योक, कूलिंग फैन, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग प्रोसेस, लैमिनेटेड कोर, एक्सप्लेनेशन ऑफ डीसी जनरेटर से आछि टाइप्स, parts, EMF equation, self excitation and separately excited generators, practical uses, brief description of a series, shunt and compound generator. छोटो टॉपिक अछि, तमे आराम से ताको कवर कर परिबो. बाकी बहुत गुडे जिंस छोटो छोटो जिंस अछि जोटा कि एग्जाम रे आसीबार फुल चांसेस अछि. नेक्स्ट, ये भी तमरो इंपोर्टेंट टॉपिक, ये तमरो कोर टॉपिक माने फुल इंपोर्टेंट. इंपोर्टेंट तो नो, फुल इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट. तमे टैग लगे परिबो, स्टार मार्क दे परिबो. नेक्स्ट, नंबर 14 डीसी मोटर्स. डीसी मोटर तमरा आसी जो टर्म्स इज डीसी मोटर, टॉर्क, ब्रेक टॉर्क, स्पीड, बैक ईएमएफ एटसेट्रा and their relations. Types of DC motors, stators within DC motors, related problems, DC motor of problems तम practice करिवो एग्जाम रे आसी पारे. Characteristics of DC motor, losses and efficiency, application of DC motors, care, routine and preventive maintenance. Next, तमरा आछि ट्रांसफॉर्मर टॉपिक रे तमरा बहुत गुडे जिंस आसुची. ट्रांसफॉर्मर इज ए बिग टॉपिक, सो ट्रांसफॉर्मर को केबे नेग्लेक्ट करिवोनी. ट्रांसफॉर्मर तमरा वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, regulation and efficiency, type and cooling, protective devices, specifications, regulation and efficiency, similar terms and आउ जो तमरा कंस्ट्रक्टिंग पार्ट्स सब अछि से सब ऊपर तमरा क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि. तो ये टॉपिक रो जे कौन सी जगह रो भी तमरा क्वेश्चन आसी पारे. ये टॉपिक बहुत बड़ टॉपिक, ये टॉपिक को केबे नेग्लेक्ट करिवोनी. ये टॉपिक रो तुमको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, बोथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिया को मिलेबो. नेक्स्ट, नंबर 16 रे तमरा आसुची इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो तुमको देखिया को मिलेबो न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुमको देखिया को मिलेबो न्यूमेरिकल क्वेश्चन. पीएमएमसी एंड एमआई मीटर को, पीएमएमसी एंड एमआई रो अमीटर, वोल्ट मीटर रिलेटेड तुमको देखिया को मिलेबो.
Stunt resistance ର problem ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। Types of indicating instrument, deflecting torque, controlling torque and damping torque ଏଇ related ତମକୁ theoretical question ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। Range extension କଥା ମୁଁ range extension କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ammeter and voltmeter ର, PMMC and MI meter ର। Then power factor meter, energy meter, insulation tester, megar, frequency meter, phase sequence meter, multimeter, multimeter, tongue tester and tachometer ये सब तुमको theoretical question देखिବାକୁ मिलिବ। Next number 17 ରେ तमर आସୁଛି three phase induction motor। Three phase induction motor is also important topic। working principle आସୁଛି ଏଥିରେ production of rotating magnetic field, squirrel cage induction motor, slip ring induction motor, construction, characteristics and speed control, slip and torque, control and power circuit of stators, dual stator, stator ସବୁ type ର stator ତମକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁ type ର stator ତମକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। Next single phasing preventer, losses and efficiency, application of induction motor, care, routine and preventive maintenance also तुमको एटे देखिବାକୁ मिलिବ। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर तुमको प्रोब्लेम मिल जिवो, तुमको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिବାକୁ मिलिବ। नेक्स्ट नंबर 18 आसुଛି सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जेमति थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेमति सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तुमको आसी जिवो के वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, तापर आसी जिवो फुल एचपी मोटर्स, रिपल्सन मोटर सब टाइप रो सिंगल फेज मोटर तुमको एटे देखिବାକୁ मिलिବ। एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन तुमको एग्जाम रे पचारे, तो एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन तुम प्रिपेयर हेकि जिवो। यूनिवर्सल मोटर भी तुमको एथे देखिବାକୁ मिलिବ। यूनिवर्सल मोटर एडवांटेजेस, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस कौन कौन सब अछि देखिवो। fault location and rectification, braking system of motor, this is also an important factor। Next number 19 आउछ अल्टरनेटर रे तमरो जेमिति डीसी जनरेटर सेमति अल्टरनेटर तुमको एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टरनेटर, कंस्ट्रक्शन, प्राइम मूवर एफिशिएंसी, रेगुलेशन, फेज सीक्वेंस, पैरेलल ऑपरेशन। देखो एटी तमरो पैरेलल ऑपरेशन इज important टर्म। पैरेलल ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन तुमको देखिବାକୁ मिलिବ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर एंड ब्रशलेस अल्टरनेटर। नेक्स्ट this is also one very important topic। next तापर आसीबो सिंक्रोनस मोटर। कोडी नंबर सीरियल नंबर आछी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर रे छोटो टॉपिक तमरा एटा वर्किंग प्रिंसिपल अछि, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेशन एंड लोड, V एंड एंटी V कर्व रिलेटेड तुमको क्वेश्चन देखा को मिलिबो। V कर्व रे तमरो ग्राफ प्लॉट होउची काका भितरे एंड एंटी V कर्व रे काका भितरे तमरो ग्राफ प्लॉट होउची ए रिलेटेड क्वेश्चन आसे। कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आसे। मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ये भी एथरे भी ए रिलेटेड भी क्वेश्चन आसे। सो सिंक्रोनस मोटर एटा स्किपेबल टॉपिक नुहे। ए टॉपिक रिलेटेड तुमको बहुत क्वेश्चन मोर 3 to 4 मोर देन 3 क्वेश्चन तुमको देखियो मिली जिवो। सो दिस इज very important टॉपिक। नेक्स्ट नंबर 21 आछी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टेक्निक्स। देखो ए वाइंडिंग टेक्निक ए रिलेटेड तुमको जदि ए रिलेटेड जदि तुम कंटेंट्स पाउछो देन ताको पढो। बट ए रिलेटेड टॉपिक ए रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आसेनी, किंतु ए टॉपिक को स्किप करिवोनी। जदि टाइम अछि ताले ए टॉपिक पढिबो, किछ असुविधा नै। क्वेश्चन नंबर 20 सीरियल नंबर 22 एसी मशीन वाइंडिंग, motor winding terminology, classification of conducting and insulating materials used in winding। को मटेरियल तमरो मटेरियल क्लासिफिकेशन आ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल क्लासिफिकेशन जोटा कि वाइंडिंग रे यूज होउची, से टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ वाइंडिंग इन सिंगल एंड थ्री फेज मोटर्स ये सब इंपोर्टेंट एथरे। तापर आतुची सब आउटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा होची इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तुमको लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इल्यूमिनेशन,
factors: intensity of light, importance of light, human eye factor, units, types of illumination. ଏଥିରେ ତମକୁ different type of lamp ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ସବୁ type ର lamp related question ତମକୁ ଆସେ exam ରେ ଆସେ। efficiency lumens ର question ଆସେ। କୋଉ ଲାଇଟ୍ କୋଉ ଜାଗାର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ ହେଇଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ର ଲୁମେନ୍ କେତେ और ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଅଛି ସେ ଗୋଦାମରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ଲୁମେନ୍ କେତେ ଯୋଉଟେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ଲୁମେନ୍ କେତେ ଏସବୁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଲୁମେନ୍ ଫର ହ୍ୱାଟ ଲାଇଟ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏଫିସିଏନ୍ସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ଏଥିରେ ଇଲୁମିନେସନ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ଟପିକ ନେକ୍ସଟ नंबर 24 इंडस्ट्रियल वायरिंग तो देखिल वायरिंग सिस्टम तापर इंडस्ट्रियल वायरिंग देखियो नेक्स्ट नंबर 25 रे आसुची कंट्रोल एलिमेंट रा सब तुमरो आइसोलेटर कंट्रोल एलिमेंट माने तुमर स्विच इज आल्सो एन कंट्रोल एलिमेंट एंड आइसोलेटर इज एन ऑन ऑफ स्विचेस push button switches indicating lamp mcb fuse conductor relays overload relay timers rectifier limit switches control transformer wiring accessories race wedge cable channel DIN rail terminal connectors thimbles locks ferrules, cable binding, strap and buttons, nylon cable ties, sleeves, grommads and clips. ये सब तुमको very very important things तुमको देखने को मिलेगा जोटा कि practical life रे बहुत important जोटा कि देखने को मिले industry रे तो ए related तुमको control element related question आसे कंट्रोल एलिमेंट्स को स्किप करिवोनी जदि टाइम नाही इट्स ओके जदि टाइम अछि ताले कंट्रोल एलिमेंट्स को सियोर पड़िवो नेक्स्ट रिले रेक्टिफायर लिमिट स्विचेस ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आसे एमसीबी फ्यूज कंडक्टर ए रिलेटेड क्वेश्चन आसे नेक्स्ट तापर आसुची 26 रे डोमेस्टिक अप्लायंसेस आमे जहा घरे यूज करछे दैट इज नोन एज डोमेस्टिक अप्लायंसेस वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट्स ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस आसुची हमर कॉलिंग बेल बजर अलार्म्स इलेक्ट्रिक आयरन हीटर लाइट इलेक्ट्रिक केटल immersion heater, hot plate, oven, geyser, cooking range, mixture, washing machine, motor pump sets, etc. Concept of neutral and earth a related big question আছে domestic appliances ରୁ 2 to 3 question ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ next এই टॉपिक तमे पढ़िले आराम से तमे जति भी क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन आसु कि 5 क्वेश्चन आसु आराम से तमे अटेंड करि परिबो बेसी हेवी टॉपिक नहे बेसी इंटरेस्टिंग टॉपिक एटा डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक power generation is also an important topic जे तुम power sector OPTCL में prepare करछो so power generation is very much important more than 10 question or 20 question जेमिति हेले भी आसीबो एथरो generation of sources of energy comparison energy resources of fuels advantages of liquid fuel and solid fuel ଯେତିକି type of plants ଅଛି hydroelectric nuclear thermal power plant diesel power plant ଯେତିକି type of plant ଅଛି ସବୁ plant ର generation ସବୁ plant ରେ power generation हुए जो plant ରେ भी power generation हुए these are comes under power generation topic next number 28 hydroelectric schematic arrangement of hydroelectric power station, constituents of hydroelectric plant, types of hydroelectric power station, advantages and disadvantages. Next, ये सब इंडिविजुअल देला पावर जनरेशन जहाँ जहाँ सब प्लांट्स आसिला तार सब इंडिविजुअल टॉपिक्स हे गला हाइड्रोइलेक्ट्रिक द नॉन कन्वेंशनल आसी जब तमरो रिन्यूएबल जेतिक आसी जब तमरो नॉन कन्वेंशनल रे जेमति कि तमरो आसीबो सोलर बायोगैस विंड एनर्जी एंड माइक्रो हाइडल tidal waves etc next number 30 আছে जो transmission of electric power electric supply system comparison of AC and DC transmission advantages of high transmission voltage introduction of single phase three wire system in transmission lines overhead lines main components of overhead lines that is types of a power line low voltage line medium voltage line and high voltage line voltage classification of a transmission line related question तुमको देखिए को मिलिबो voltage standard
conductor materials को conductor material यूज होची जेमति कि SESR डबल ए ट्रिपल SAR SESR connector ଏସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଲାଇନ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ insulators types of insulator line support types of insulator this is also one very good topic ଏଇ topic ରୁ ତମକୁ more than 10 question ତମକୁ ପ୍ରାୟ exam ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ OPT syllabus କରିକି more than 20 question ବି ଆସିପାରେ next serial number 31 underground cable ତମର construction and material for cable ମାନେ କୋଉ layer ରେ କୋଉ type ର material ୟୁଜ ହଉଛି ଏ related question ଆସିବାର full ସମ୍ଭାବନା ଅଛି next number 32 distribution of power distribution ର ତମର ଆସିଯିବ function and equipment used in substation classification of distribution system AC distribution overhead versus underground distribution system essential features of switch gears isolators switch gear equipments bus bar arrangement short circuit faults in power system next number 33 আছে circuit breaker ଗୋଟେ switch जोटा कि सर्किट को ब्रेक करे इन ऑल कंडीशन तो सर्किट ब्रेकर रिलेटेड तमरो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर अछि तार क्लासिफिकेशन अछि लाइटनिंग अरेस्टर यूज्ड इन हाई टेंशन लाइन नेक्स्ट नंबर 34 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सब सरला परे फेर ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आरंभ हो गला कोन introduction use of electricity how electricity is produced types of current AC DC their comparison voltage resistance their units already ସବୁ ତମର ସରିଛି ଏଟା repeated topic basic electricity in a repeated topic sorry ଏଟା repeated already topic mention ହେଇ ସାରିଛି AC DC comparison voltage resistance units ଏ ସବୁ ସରିଛି ହେଲା repeated topic 35 DC machine graphic symbols for rotating machine sketching of a brush and brush gear of DC machine ये ସବୁ ତମର drawing ମାନେ ଯେତିକି ତମର schematic diagram ଅଛି ସେ diagram oriented ଏଥିରେ ତମକୁ question ଆସେ next ତାପରେ ଅଛି transformer 3 phase induction motor next distribution of power control panel हाँ control panel तमटा important practice in reading panel diagram local and remote control of induction motor with the inching forward and reverse operation of induction motor automatic start delta starter with change of direction of rotation sequential control of 3 motors next number ପଟରେ ତମର ଆସୁଛି sign symbol trade related alternating current drawing of simple electrical circuit using electrical symbol next drawing of sine square and triangular waves different type of wave तुमको draw କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ related question ଆସେ diagram of a battery charging circuit practice in reading typical example of circuit containing RLC reading of electrical drawing next number 41 आସୁଛି magnetism जोटा कि very important topic classification of magnets methods of magnetizing magnetic material magnetism topic ର जो term ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି କି ତମର ଆସୁଛି classification and term paramagnetic diamagnetic ferromagnetic material then principle ତାପରେ ତମର जो ଆସୁଛି principle ରୁ ବି ତମର ଆସୁଛି question next ତମର ଆସିଯିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ ପଢୁନି ଖାଲି କହିଦଉଛି ତମର ଟର୍ମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ MMF flux density reluctance BH curve hysteresis eddy current ये सब related question आसे principle of electromagnetic induction Faraday's law Lenz's law electrostatics capacitor different types of capacitor functions and uses so magnetism topic is very important ୟାକୁ skip କେବେ ବି କରିବନି next हाँ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 60% ସରି 80% ଦେଖିଥିଲେ 80% of 200 that is 160 MCQ
from technical. Here 10% numerical, GK and reasoning, and 10% English. That is English तमरा आसुची 20 question, 20 MCQ, numerical, GK and reasoning ये मिसिकी 20 MCQ. Total ହେଇଗଲା ତମର 200 MCQ. This is all about syllabus discussion. Next ଆମେ କିଛି questions और କିଛି concept discuss କରିବା next class ରେ. जो माने जाय सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो. जो माने WhatsApp ग्रुप रे जॉइन होवा ପାଇଁ चाहूचो मेसेज करो. जो मैंने WhatsApp ग्रुप रे जॉइन होवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 8118022248 रे मेसेज करो. अदरवाइज डिस्क्रिप्शन रे तुमको लिंक दिया है WhatsApp जॉइन ପାଇଁ ग्रुप रो. ओके.